So I have Adnan with me, and I need another student to come to the stage and talk to Adnan. Nazia, would you like to come to the stage? Azima, you were absent yesterday. Was everything all right? Would you come to the stage, please? Yes, Azima. Azima, Nazia, Atif. It's been a while. So would you like to come to the stage and tell us about your day? So looks like nobody's interested except for Hassan and Adnan, and the rest of the students are here, uh, and they're just passive listeners listening to whatever I'm saying, as if it were a radio podcast kind of thing. Anyway, so since Hassan is here and Adnan is here, so let's talk to them a little bit. And Hello, sir. Walaikum assalam, Hassan. How are you today? Is it I am fine, Hassan or Alhamdulillah. What is it about you? okay, Hassan? I'm good. I'm fine. Adnan, unmute your microphone, please. Yes, Adnan. Yes, Adnan. Strongly, sir. Salam. Walaikum salam. How are you today? Alhamdulillah, fine, sir. What about you, sir? I'm good. I'm fine. Okay, so Hassan, why is your microphone muted? Okay, so Adnan and Hassan, I want you to talk to each other about the problems that you face in learning English. Can you tell each other what kind of problems you face, your weaknesses in English? Could you do that a little bit, Hassan and Hello, Adnan? son. Hello, son. Are you here? Hassan, are you there? Hassan is not responding. So, is there anyone else that would like to come to the stage and talk to Adnan? Nobody. Okay. We can hear somebody in the background, but Hassan is not. He's not here anymore. Well, anyways, Adnan, what about you? Tell me about your weaknesses in English. Sir, I have weak in English in talking and also in writing. Writing. So written English is not good, and your spoken English is not good. And why do you think what's responsible for that? Sir, I think uh, for that our reading skills are must responsible. So We should you're we should mm-hmm, have mm-hmm. we have to improve our reading skills. Due to reading skills, we can improve both things, I think. Yeah, reading is definitely important because reading improves a lot of things, no doubt. Reading provides you vocabulary and improves your grammar, and it also Hmm. improves your knowledge of the world. So you get a lot of knowledge about, well, about the whole world, what's going on, what happened in the world, about the past. You get everything, like whatever you're interested in. So reading is definitely a good thing, but reading is just, again, reading. When you communicate with people, that's a different story, isn't it? Yes, sir. So Exactly, sir. what do you think that you why you lag in speaking, like your speaking skills are not good? What's responsible for that? What is your opinion? Sir, here's a major role of our environment because we are the native speakers of Sindhi language and also Urdu. We must talk each other in English language. So Okay. we Mm-hmm. don't follow that. We don't follow that. Due to Mm-hmm. due to this reason, we are facing this situation. You're facing this situation. Okay. So how to overcome that problem? Like how to get rid of that problem? What to do to become a fluent speaker? What do you think? Sir, in my opinion, we should try to speak in English in each Who would you other talk at to? our homes. No, but you see, at Sir, home, everybody's speaking in Sindhi or Urdu. yes, sir. So you don't Yes, have sir. anybody at home, or you don't have anybody outside in your neighborhood, or maybe your relatives
or your friends, I don't think that they speak English. So how do you practice your spoken English? What do you do? So I have must join that platform where the where native speakers of English are spoken. Like this Mm-hmm. platform, we should try ourselves to improve Mm-hmm. our English. And where I live at Hyderabad in hostel, Mm-hmm. our room Mm-hmm. must our roommates must still speak in English. So On I mean, you've got due, you. How many roommates have you got? so we are three roommates How in many? our Through building. three roommates, and all of these three roommates, do they speak in English? Are they interested in learning English? Yes, sir. We try for that to speak in our Okay, English. that's wonderful. But one more thing, you know what? In order to speak properly, you should know how to make sentences. Make sense? Yes, sir. Like if you want to speak, I mean, you should know what you want to speak and how to say it, right? If you, let's say you want to say something, but you don't know how to say it, or you don't know the construction, you don't know how what to use to say that, so you're gonna have problems. You won't be able to say it, right? Yes, So sir. that's why taking classes and learning grammar and learning how to say something is important, because if you don't Yes, sir. know how something is said, you won't be able to communicate, right? Exactly, sir. Okay, so thank you very much for being here on the stage with me, Adnan. And I also had Hassan, but he left. I don't know what went wrong. And there are other students that I see, they're online, but they're just too scared to come to stage and talk. And I don't understand their ideology of improving English, because if you are so scared, you can't come here. Everybody here is to improve, and they definitely they're not good. I mean, that's the reason that they're here. And maybe some of them might not be good at reading, or they might not be good in speaking. So people, they have problems. That's why they go to different classes or courses. So I see there are a couple of students here, but nobody is coming to the stage to talk. Come on, guys, be a sport. Don't be scared. Come to the stage and talk to me a little bit. I don't want you to come here and deliver speeches. So Azima is here, but she's not responding, and other students, I see them, but Mubashir is here, not coming to this stage. Nazia, Amir Hamza. Okay, Amir Hamza has been absent for a lot of days. I see Rajwali Khan. I see Seher is also here, I think. Okay. Yes, Mubashir. I'm gonna have Hammer as well on the stage with me. So Mubashir and Hammer. Hammer, what happened? Yes, Assalamu Hammer. alaikum. Wa alaikum assalam. How are How you are you? today? I'm Good. good, alhamdulillah. I'm fine. Okay, Hammer is there. Assalamu alaikum, Hammer. Ahmer, I can hear people in the background, but I can't hear you. How is that Assalamualaikum. possible? Walaikum assalam. Okay, I can hear you now. So Mubashir, he's here, and you're here too. And we've got some people in the background. It's a noisy background. It's really noisy, actually. Hammer. Okay, I'm really sorry. I can't have you on the stage like that because it's just too noisy. It's just too noisy. I'm really sorry. So before coming to the stage, you need to make sure that your background is not that noisy, or if it is noisy, if it is possible for you to move to a different place, like a quieter place, you should do that. Well, Mubashir, um, since I'm asking today, everybody, I'm asking them about their weaknesses in English and what kind of problems they face in English. So the same question is to you. What are your weaknesses in English? My weakness, I cannot speak in a public or in front of
a person who know English properly. So and that is because you're not confident and you don't know how to speak. Yes. Hmm. And what do you think? Why that is so? Why is why you have this problem? I mean. Uh, because in our schools they did not teach us how to speak or how to learn. Hmm. He say us only writing. He said us to write. Okay. Well, makes sense. I understand. Totally understand. Okay. So now what to do now? What? Sorry, I didn't understand. Oh, I said how to overcome this problem. The the way Okay, so you what are teaching you us. going to do? What are you going to do in order to become a fluent speaker and how to be a confident speaker? What are you going to do? What do you think you should do or one should do? I will inshallah join your classes. You are a good teacher. Inshallah, I will Okay. join. Thank you very much for that compliment. Okay, but the thing is, you see, a good teacher is definitely important. A good course is important, but at the same time, a good student is also important. Yes. Right? It is important to be a good student, an obedient student. If you're listening to your teacher and you're actually doing as you're asked, that's more important than just having a good teacher or just having a good platform. Teacher has Right? man. Teacher has man a role in teaching. Yeah, definitely. I understand. Yeah, no doubt about that. Teacher plays an important role, but even what's more important is you. If Yes. you're doing what your teacher is asking you to do, right? Yes. Like, You're right. okay. So tell me about it. You actually you were asleep. You couldn't wake up to take your class, and I was kind Um, of surprised to know that you were sleeping in the evening. my What my happened? my paper of DIT has been started. So I wake up at 8 o'clock. That's Uh why huh. I was a little bit lazy, so I sleep. Uh huh. Okay. So, oh, say let's say Mubashir, uh, Yeah. when you told me once maybe or you were talking to another student in a breakout room that you wanted to Yes. go abroad. Isn't that right? Yes. Yes. I told you. Yeah, and in order to do that, you need to learn English, right? Yes. Yes. Okay, but what's your particular field of interest? Sir, my father call is coming. Okay, oh, yeah, Can I no cut? problem. Okay, yeah, sure. Okay, we have Nazia with us, and I'm gonna have Nazia on the stage with me. Assalamu alaikum, Nazia. Nazia. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam, Nazia. How are you today? Um, How are you? Hello, assalamu alaikum. Yeah, wa alaikum assalam. Can you hear me? Can you Yes, yes, hear I me? hear you. Okay, good. Okay, Yes, Nazia. So sir. I'm looking at your card, but I don't see where you're from. I just see an employee, but I don't see where you're from. So where are you from? Nazia, where are you from? Okay, so maybe Nazia is facing some internet connectivity issues. So I'm gonna have Adil Siddiqui on stage with me. Yes, Adil. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam, Adil. How are you today? I'm totally fine. How are you? I'm good. It's been a couple of days. I think you've been absent, haven't you? Yeah, actually, sir, there are a couple of reasons. The first is actually in our area the internet is not good, and the second thing is I'm busy in my work because as a Hmm. programmer, you know about programming. Mm-hmm. We were busy all the day, So I so. understand. So English is not that important, right? I mean, it's a secondary thing. Yeah, No, I mean the primary thing you just said that the primary thing is your software, and definitely it is. I understand, but you need to have some time for English if you think it is important, huh? actually, sir, we are doing a final year project, so we Uh have huh. just 80 days left. Uh So we huh. have to submit our project
So that's why, Totally. yeah, I'm too Sure. I much mean, I busy. want, yeah, I totally agree with you. But there is, you'll never be free in your life. That's also a bitter truth, because you see, you'll always be busy. You'll have tomorrow, you'll have something else. After 80 days, you're gonna have something else, and after 100 days, you're gonna have something else. So we're always busy. Honestly, Ye- I'm telling you that you're never gonna say in your life that I'm free, or I don't, I have a lot of time, I don't have anything, and now I can learn English, or now I can do something else, or maybe I can learn a new skill. But the thing is, honestly speaking, we never get time as we grow older. We just run out of time. Isn't that yeah, right? I experienced this thing. Okay, so Adil, what kind of problems do you face when it comes to speaking English, or written English, or whatever? So actually, I think the most important thing is I have no confidence, because as a programmer we speak less and think more, because the programming is all over the logic. So I think this is the main reason. But now I started to make little sentences, short sentences that are used in Mm-hmm. daily base. So, Mm-hmm. but when I joined your classes, so no, um, I have Mm-hmm. enough skill that I can speak Mm-hmm. not more, but I can speak properly on a daily basis conversation. Mm-hmm. But that's Yeah, wonderful. That's really good. But there's still a long way. Don't you believe? Like, you need to be fluent, you need to be able to describe anything that comes to your mind, right? yeah, Okay, so what's your future plan? What do you why do you want to learn English, and where do you want to go? Like, you want to go to an English speaking country, America, Canada, Australia, somewhere actually, after my study I have planned that I will go for further study in UK to do in MS the in UK? software engineering or computer science. So that's Uh-huh. why I'm trying to learn basic English, like spoken English, grammar, etc. Mm-hmm. And after that, I tell you something, we don't say etc, we say etc. We never say etc. We never say that. We always say etc. What do we say? Etc. 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 Yeah. Etc. 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 Yeah. Yeah, So, well, today I did teach you something, right? So don't yeah, be never be embarrassed, like, because you see, it's the duty of a teacher to guide their students. It's my duty when I listen to you, and if you're making a mistake, sometimes we don't tell mistakes because you see, we don't want to agitate you. Agitation, yeah, cranky. Yeah, so sometimes we ignore your mistakes. Teachers ignore mistakes on purpose, and sometimes they tell you your mistakes. So I think that's better. Sometimes you tell them, sometimes you don't tell them. Anyway, so good luck with your future dreams, and I hope that you achieve your dreams, and I yeah. I'm also very hope that lucky. I'm very lucky inshallah. that I joined Alhamdulillah. your class, because I Okay. learned most of the things from your class. Alhamdulillah. That's wonderful that you're learning, right? That's really good. Thank Because you I very much, started, Adil. Mm-hmm. yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. No, No, sir, no, I'm complete just your sentence. Okay. Adil left. Nazia, unfortunately, we have run out of time, but maybe later. Okay. When I have time in the end. So I'm going to share my screen now. Today's topic is, as you can see, is possessive nouns. That's what we're going to do today. आप सोच रहे होंगे आज बड़ी इंग्लिश चल रही है, आज तो उर्दू में कुछ बोल ही नहीं रहे, सर को क्या हो गया, इंग्लिश ही इंग्लिश चले जा रही है, ऐसे ही सोच रहे होंगे, है ना कुछ। मतलब देखिए, कोशिश तो ये होती है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बताऊँ कि जब आप किसी टीचर को सुन रहे होते हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको उसकी इंग्लिश बोलने का ढंग पता चल जाता है। कोशिश मैं यही करता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता मतलब थोड़ा स्लोली बोलूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ना, बंदा अपनी रवानी में चलता चला जाता है। तो उर्दू में भी मैं बोलता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी जो फाउंडेशन लेवल क्लासेस हैं, जैसे कि ये चल रही है, और इसके बाद जो बिगिनर लेवल है, ये 2 लेवल्स हैं बस हमारे पास, जो कि बाइलिंगुअल होते हैं, यानी थोड़ी-सी उर्दू होती है और ज़्यादातर कोशिश होती है इंग्लिश बोली जाए। उसके बाद ये लेवल्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लेवल्स हैं आगे के, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिगिनर लेवल करने के बाद आप में ये काबिलियत होती है कि अब आप जो है वो इंग्लिश में ही इंग्लिश सीखें। और सबसे
बेहतरीन चीज़ यही है कि इंग्लिश को इंग्लिश में सीखा जाए या किसी भी ज़बान को उसी ज़बान में सीखा जाए। क्योंकि जब तक आप ये उर्दू के तरीक़ेकार से निकल के नहीं आएँगे बाहर, अब तक आपको किस तरह पढ़ाया आपने? मैं बताता हूँ आपने सालों ज़िंदगी कैसे आपने गुज़ारी इंग्लिश पढ़ के, वो इस तरह गुज़ारी जनाब रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता है, ती है, चाहिए, नहीं चाहिए। ये वो तरीक़ा है जो आम तौर पर हमारे स्कूल्स में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही है ना? और यही वो वजह है कि अब तक आप लोगों को जो है वो इंग्लिश नहीं आती है। वो क्यों आएगी जब उर्दू में के अंदर फँसा के रखा है आपको सारी ज़िंदगी लोगों ने। टीचर्स नहीं, ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने, लोग कौन है? ये वो टीचर्स ही हैं जिन्होंने आपको इसमें फँसा के रखा, आपको रहा है, रही है, वो खाता है, वो जाती है, मुझे चाहिए, मुझे पानी चाहिए। मतलब कम ऑन! सोचिए ज़रा ये क्या है ये? अच्छा कहते हैं कि जी वो नहीं बेटा इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो। ओ भाई बेटा कैसे इंग्लिश में सोचेगा? आपने तो उसे उर्दू के चक्कर में डाला हुआ है। आप तो उर्दू के जुमले का इख्तिताम बताते हैं। रहा है, चुका है, ता है, ती है। जाके यूट्यूब पे देखें जितने भी उर्दू में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं ज़रा जाके देख लें आप। आपको पता चल जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। वो सब आपको यही सिखा रहे होंगे। मतलब अक्सरियत मैंने जितने भी यूट्यूब पे जाके देखा है ना चैनल्स, जो मुझे नज़र आए, अक्सरियत मुझको यही नज़र आई कि सारे के सारे जो है ता है, ती है, चुका है। भाई तो फिर क्यों नहीं आ जाता लोगों को, क्यों नहीं फर-फर से इंग्लिश बोल रहे सारे के सारे? मुझे तो ये समझ नहीं आई आज तक बात। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई यहाँ ये रहा है और चुका है, ती है, अलिफ छोटी है, बड़ी है, जाता हूँ, गा, गी, गे, ये बड़ी काम की चीज़ है। भाई तो फिर आपको क्यों इंग्लिश नहीं आई? व्हाई आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश? व्हाई डू यू स्टिल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टेंसेस आर? Why can't you speak? Answer this simple question. Why can't you write? Answer this simple question. Do you have an answer to that question? You don't. भाई कोई जवाब है आपके पास? क्यों नहीं है कोई जवाब आपके पास? ये जो अगर ये जो तरीक़ाकार इतना ज़बरदस्त होता और इससे जो है वो इंग्लिश लिखना भी आ जाती है और बोलना भी आ जाती है और अंग्रेज़ परेशान हो जाते हैं आप लोगों के, और ये तो बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश बोल रहा है, हमसे ही बेहतरीन बोल रहा है भाई। तो क्यों नहीं बोल लेते? क्यों अभी भी? क्योंकि मसला ये है कि ये तरीका गलत है, ये समझने की कोशिश करें। अगर अगर ये तरीका आपने भी तो इसी तरह पढ़ा है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने भी इसी तरह पढ़ा है। समझ रहे हैं? जब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि इस चीज़ से बाहर निकलें, उर्दू से बाहर निकलें और इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। खैर लेट्स कम to the topic. Today's topic is actually possessive nouns. So, using an apostrophe, yesterday I told you about using an apostrophe, and इसको apostrophe पढ़ते हैं हम। आप कहेंगे सर आप तो इतना बन के बोल रहे हो। भाई मैं बन के नहीं बोल रहा, अदायगी इसी तरीके से है। अब आपकी वजह से मैं गलत अदायगी तो नहीं करूँगा ना। मिसाल के तौर पे ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया था यूट्यूब चैनल पे काफ़ी मेरी वीडियोस मौजूद हैं प्रोनाउंसिएशन के हवाले से। आपको मैंने लिंक भी सेंड किया था, पता नहीं आपके पास है या नहीं है। खैर मैं भी दोबारा लिंक सेंड कर दूँगा आपको, ठीक है? तो उसमें आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी। जैसे एक लफ्ज़ है, हम बोलते हैं मायोनीज़। आप कुकिंग शोज़ देखें उसमें बोलते हैं मायोनीज़, दुकान पे जाते हैं कहते हैं मायोनीज़। भाई मायोनीज़ तो नहीं होता ना, अदायगी तो है मेयोनेज़। अब आप कहेंगे ये कहाँ से निकाल के लिया है? भाई मैं कहीं से निकाल के नहीं लाया, ये है ही है। दिस इज़ द राइट प्रोनंसिएशन, दैट्स हाउ यू से इट। मेयोनेज़, मेयोनेज़। नाउ अब आपको सही चीज़ नहीं मालूम, मुझे सही मालूम है, मैं तो सही बोलूँगा, आप कहेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि हमें गलत आती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ज़िंदगी में, अपने आस-पास ही देख लेंगे आप, अगर सही अदायगी करेंगे ना थोड़ा-सा और मुँह टेढ़ा करके बोला है, अंग्रेज़ चले गए इनको छोड़ गए। ये बड़ा मशहूर है, मैंने बहुत सुना है ऐसा। अंग्रेज़ चले गए इनको छोड़ के चले गए और इनको तो मुँह टेढ़ा करना पड़ता है। मैंने तो आज तक अपना मुँह टेढ़ा नहीं देखा इंग्लिश बोलते वक़्त। मैं तो सही अल्हम्दुलिल्लाह सही लगता है, जाके वीडियोज़ चेक करें मेरी, आपको मुँह टेढ़ा लग रहा है क्या? लगे तो मुझे बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा कि मुँह टेढ़ा ना हो, ठीक है? Khair, using an apostrophe is what I taught you yesterday to join two words. That's one use of apostrophe. अच्छा जी, apostrophe को जो एक इस्तेमाल है वो ये है कि हम उसको contraction के लिए इस्तेमाल करते हैं to join two words to make them short. राइट इनको शॉर्ट करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए, कंट्रैक्ट करने के लिए, जॉइन करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अब सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का ये एक इस्तेमाल नहीं है, अपॉस्ट्रोफी का एक और दूसरा भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? दूसरा भी इस्तेमाल है। हम ये ना समझे बस एक चीज़ सीखी है, बस बस दैट्स इट, ये लकीर हो गई है, बस यही है बस और कुछ नहीं कर सकता ये अपॉस्ट्रोफी। भाई अपॉस्ट्रोफी कुछ और भी कर सकती है, वो ये है कि हम जो है अपॉस्ट्रोफी को इस्तेमाल करते हैं नाउन्स को पॉसेसिव बनाने के लिए, मिल्कियत बताने के लिए, किसी की जायदाद बताने के लिए, मिल्कियत, कोई किसी चीज़ का मालिक है, टू शो ओनरशिप, राइट? समवन्स ओनरशिप। And how to do that? Let's look at that. So today's topic is actually possessive nouns.
An apostrophe with an S. This is what we use. And yesterday, some of you did ask me about it, and I told you that we'd do it later, and today we're doing it. आप में से कल कुछ ने पूछा था कि भाई वो सर वो apostrophe s भी होता है कुछ possessive noun, तो हम वो देख रहे हैं, आज हम वही चीज़ कर रहे हैं. To make a noun possessive. Noun क्या होता है? I've already told you that. Name of anything. Now, how to make a noun possessive? यानी noun को possessive state में कैसे लाएं कि हम उसकी मिल्कियत बता रहे हैं. कोई भी जो है noun है, मिसाल के तौर पे असलम फॉर एग्जाम्पल. सो how to change that into a possessive. हम बताना चाहते हैं असलम की कोई चीज़ है, तो हम कैसे बताएं? असलम किसी चीज़ का मालिक है या असलम से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, तो हम कैसे बताएं? ये चीज़ हम असलम को possessive noun में तब्दील करके बता सकते हैं. और ये रोज़मर्रा की चीज़ है. ये it is something that you do on a daily basis. रोज़ाना हम तकरीबन इसी तरीके के जुमले बना रहे होते हैं आमतौर पे, right? So to make a noun possessive, we use an apostrophe with an s. For example, and remember that you use an apostrophe only with nouns to make them possessive. जो apostrophe का इस्तेमाल है possessive बनाने के लिए, वो सिर्फ nouns के साथ होता है. अगर आप pronoun के साथ apostrophe का कहीं इस्तेमाल देख रहे हैं ना, तो वो possessive case नहीं है, बल्कि वो contraction है, जो हमने कल किया था. तो अभी इस चीज़ को देखते हैं. देखें जी, एहसन है जी, ठीक है, हमारे पास एहसन एक बंदा है और एहसन के पास एक बॉल है, ठीक है, अब वो इसका मालिक है. तो हम कैसे बताएं? ये बात हम कैसे बताएं कि बॉल किसकी है? तो हम क्या करेंगे? अगर हम ऐसे बोलें एहसन बॉल, तो ऐसा लग रहा है कि एहसन बॉल है, ऐसा मालूम होता है. अजीब सा लग रहा है. एहसन बॉल, व्हाट डज दैट मीन? एहसन बॉल. सो व्हाट आई डू इज दैट I want to tell that the ball belongs to Ahsan. So what I do is Ahsan, and then I add an apostrophe with S. Apostrophe S. Now Ahsan, I'm sorry, Ahsan's ball. Ahsan's ball. Right? So this means that the ball belongs to Ahsan. Likewise, the old man's walking stick. The old man's walking stick. So the walking stick, who's the owner of the walking stick? The old man. Now, if I just say the old man walking stick, that doesn't make sense. Now, I need to change the old man into a possessive noun. How do I do that? By adding an apostrophe with S. The old man's. The girl's bags. It means that the bags belong to the girl. The girl's bags. Whose bags? The girl's bags. So who's the owner of the bags? The girl. Now, if I just say the girl bags, and that is totally wrong, right? I need to change the girl into a possessive noun because I'm telling that something belongs to the girl. मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ है जो कि जिसकी मालिक जो है वो लड़की है, जो इसको जो जो लड़की जिसकी ओनरशिप है उसके पास. सो द गर्ल्स बैग्स, हमने क्या किया कि गर्ल के आगे apostrophe s लगा के उसको possessive noun में तब्दील कर दिया. If you've got any questions, put them in the Q&A tab about this. If this is clear, just type we understand or something like that. Clear, just write clear so that I could move on. And if you have any questions, you can put them in the Q&A tab. Just show me a thumbs up. Okay, thank you very much for that. So let's move on. So देखें, आप किसी की भी मिलकियत बताना चाहते हैं, चाहे वो थॉम हो, जैक हो, वो सलीम हो, एनीबॉडी, आप उनकी जो है मिल्कियत बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ उनकी है, तो आप उनको किस तरीके से possessive noun में convert करेंगे? By adding an apostrophe s. Now, there are different kinds of nouns, right? Nouns की जो इकसाम है वो मुख्तलिफ होती हैं. अब proper nouns होते हैं, किसी शख्स का नाम है, ठीक है ना, कोई बंदा है, किसी शख्स का नाम है, proper noun हम कहेंगे. Proper noun क्या होता है भाई? देखें, proper noun होता है, मिसाल के तौर पे किसी आदमी का नाम है सलीम, ताहिर, जॉन, ये proper nouns हैं, खास नाम है, ठीक है. चूंकि the topic is not proper or common noun, we'll do that later at the next level, hopefully. So, well, for now, just remember, if you have Adnan says, please share your screen again because it's not shown. Do you not see my screen? If you don't see my screen, just let me know. What about the rest of you? Do you see my screen? Please confirm. And Adnan, if you don't see my screen, I suggest leaving and rejoining. Please leave and rejoin. Okay, simple as that. Okay, so Rajwali says yes. Okay, thank you very much. Everybody sees my screen. So, like I said, proper nouns. So, Salim car. If I say Salim car, that doesn't make any sense, right? Salim car, that's wrong. Salim's car. Tahir's book.
John's brother. Now we know that the car belongs to Salim. Salim's car. So it means that the car belongs to Salim. Tahir's book, it means that the book belongs to Tahir. John's brother, it means that whose brother? John's brother. I mean, John is not the owner of his brother, but he's related to, I mean, the brother is related to John, right? You understand what I'm trying to say? For relations, like you know, you can use apostrophe s for relations as well. So Salim's car, Tahir's book, John's brother, right? Let's move on. So if it's a proper noun, just add an apostrophe s. If you're making a proper noun possessive, अगर proper noun है, किसी शख्स का नाम है, किसी लड़की का नाम है, किसी लड़के का नाम है, और आप उसको जो है वो possessive noun में तब्दील करना चाह रहे हैं, उसकी मिल्कियत बताना चाह रहे हैं कि भाई सलीम की गाड़ी या सलीम का घर या असलम का महल या whatever, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है? apostrophe s लगा देना है. Rule number 1. Rule number 2. Proper nouns ending in s. Now there are some proper nouns that actually end in s, in an s, right? For example, Rais ends in s, James ends in s, Jess ends in s. So there are nouns, some nouns that actually end in s. So there are two ways to change them into a possessive noun. What are those two ways? Adding an apostrophe s or just an apostrophe. Adding an apostrophe s or just an apostrophe. देखें, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप possessive noun तब्दील करने के लिए क्या करते हैं? उनके आगे या तो apostrophe s लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया पिछली स्लाइड में, या आप उनके साथ सिर्फ apostrophe लगा देते हैं. तो दोनों ही सही हैं. क्या कहा? दोनों ही सही हैं. लेकिन ये अब आपकी मर्जी है. अगर आप, लेकिन ज़हन में रखें कि प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा. अगर आप apostrophe s लगाएंगे तब भी आप क्या पढ़ेंगे? Rais's car. और अगर अगर आप सिर्फ apostrophe लगाएंगे तब भी आप पढ़ेंगे Rais's car. अगरचे एक और s लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे आप उसको. Rais's car ही पढ़ेंगे. James's wallet. अगर आपने apostrophe s भी लगाया है तब भी, और सिर्फ अगर apostrophe लगाई है तब भी James's wallet पढ़ेंगे. Jess's books. Apostrophe s. अगर आपने सिर्फ apostrophe लगाई तब भी आप पढ़ेंगे Jess's books. So you know what? मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ apostrophe वाली कहानी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे प्रॉपर नाउन्स के साथ apostrophe s लगता है. तो आप एक असूल पे चलें. एक असूल को ध्यान में रखना. It's easier than remembering two or more rules, right? So when it's your choice, I suggest sticking with apostrophe s. जब आपके पास एक choice है, आपके पास एक यानी कि आपके पास एक choice है, क्या कहते हैं उर्दू में choice को? देखा, जहन से निकल गया. खैर, तो आप क्या करें? That's it. आपने करना है क्या है? Apostrophe s लगाएं proper nouns के साथ. That's what you should do. Get it? Simple. Now, singular common nouns. Now let's talk about singular common nouns. If a noun is common, and before I move on, there's a question, I think. Furqan's hand. Is it right? Definitely it's right. Furqan's hand. Whose hand? Furqan's hand. Hand belongs to you. You are actually the owner of the hand, right? It's related to you. It's your body part. So yeah. Okay, so let's go. Let's get back. So singular common nouns. If a noun is singular and it's also a common noun, in that case you're gonna add apostrophe s. अगर noun कैसा है? Singular है और उसके साथ साथ common है, proper नहीं है, कोई खास नाम नहीं है, बल्कि common noun है, तो आप क्या करेंगे? उसको possessive noun में तब्दील करने के लिए apostrophe s. जैसे कि a child's toy, a child's toy, a woman's hat, a doctor's clinic. Get it? A child's toy, a woman's hat, a doctor's clinic. Simple. Apostrophe s. But if a noun is plural and common, in that case, you're just going to add an apostrophe. Don't add an s. Just an apostrophe is enough. अगर कोई noun plural है, singular नहीं है, बल्कि अब क्या है? Plural. और common भी है. Plural है और common है. तो अब क्या करेंगे? उसको possessive noun में तब्दील करने के लिए we're just gonna add an apostrophe. That's what we're gonna do. Boys, cars. We're not gonna say boys' cars. Boys, cars. Teachers, students. Nurses, patients. That's what we're gonna say. That's how you pronounce it. You're not gonna say boys' cars, teachers' students, nurses' patients. ऐसा नहीं बोलेंगे. इसमें सिर्फ apostrophe लगेगी बस.
boys, cars, teachers, students, nurses, patients. That's what you're going to say. And that's how you're going to pronounce it. And you're just going to add, if you're writing it, when you're talking, there's no written, like you're not writing anything. There's no apostrophe there's no letter or no words. So you don't have to worry about that when you're just speaking, right? So make sure you don't make any pronunciation errors. You don't say boys is, that's wrong. Just boys, cars, teachers, students, nurses, patients. That's how you pronounce it. Just add an apostrophe. Plural common nouns that are irregular. Now आपको मालूम है ना, कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके जो plural होता है वो irregular होता है. ठीक है, यानी देखें अमूमी तरीका मैंने आपको बताया था शुरू में कि usually what we do to make a singular noun plural we add an s. एक अमूमी तरीका जो इंग्लिश में राइज है वो ये है सिंगुलर को प्लूरल में तब्दील करने का कि उसके आगे हम s लगा देते हैं. सबसे कॉमन तरीका. इसके अलावा भी और तरीके होते हैं लेकिन सबसे आम तरीका यही है. तो अगर कोई नाउन लेकिन ऐसा प्लूरल नाउन है, अभी हमने पीछे जो देखा था, मैं एक मिनट पीछे प्रेजेंटेशन में जाता हूँ अपने स्लाइड पे, सॉरी. तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपको नाउन्स नजर आ रहे हैं ये प्लूरल कॉमन नाउन्स हैं, प्लूरल हैं और कॉमन नाउन्स हैं. बॉय सिंगुलर होता है, उसके आगे एस लगाते हैं, प्लूरल बन जाता है. टीचर सिंगुलर होता है, एक टीचर, उसके आगे एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है टीचर्स. नर्स के आगे एस लगाते हैं बन जाता है नर्सेस. इस तरह हम ये प्लूरल नाउन्स बनाते हैं जो एस लगा के बनाते हैं. लेकिन समटाइम्स we have nouns whose plural is not made by adding an s. They're totally different, and that's why we call them that they're irregular forms. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका जो plural होता है ना वो s लगा के नहीं बनता बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. जैसे child है, child. अब child का जो है वो plural क्या होता है, s तो नहीं लगाते child के आगे, बल्कि क्या होता है, child का plural irregular है, children. man, 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 उसका जो प्लूरल है वो क्या होता है, एम ई एन मैन. इसी तरह वुमन, वुमन एम ए एन वुमन सिंगुलर होता है और एम ई एन वुमेन प्लूरल होता है. तो ये इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स हैं. अगर ऐसा कोई नाउन है जिसको आप पोजेसिव केस में लाना चाह रहे हैं, यानी आप उसकी मिल्कियत बताना चाह रहे हैं, तो ऐसी की सूरत में क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा. अगर ये प्लूरल है लेकिन ये जो है वो irregular form है. It's an irregular plural common noun. That's why we're not just gonna add an apostrophe. जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि plural noun था, common plural noun था, हमने आगे उसके सिर्फ apostrophe लगाई थी. लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि उसका जो plural था ना वो s लगा के बनता है. लेकिन कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका plural s लगा के नहीं बनता. In that case, you're gonna add an apostrophe with s. That's what you're gonna do. If you've got any questions, please. Okay, Furkan says it's Ali's and Furkan's car. That is a different thing. That's a different thing. Okay, I'm gonna come to that. I'm gonna come to that. Okay, now apostrophe s doesn't make pronouns possessive. Apostrophe s जो है कभी भी pronouns के साथ लग के उनको possessive नहीं बनाता. Apostrophe s जो हम nouns को सिर्फ possessive बनाता है, ज़हन में रखिएगा. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो हीज है ये possessive pronoun है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये contraction है he is की. और अगर आपको she's और it's या आपको possessive noun या pronoun लग रहा है, that is ऐसा नहीं लगना चाहिए. That's wrong. It's not right. The right we use apostrophe s. We're not using apostrophe s. This is a contraction of he is. We just removed I of is and we contracted these two words together and we placed an apostrophe. हमने किया यहाँ पे, हमने he और is को मिला दिया, is का जो I था उसको हटा दिया और उसकी जगह हमने apostrophe लगा दी. इस तरह हमने contraction बना दी. ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपको याद हो और आपने कल की क्लास ली थी तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, तो ज़हन में रखेंगे जब कभी भी हम आपको जो है वो किसी नाउन प्रोनाउन के साथ, सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन के साथ, अगर आपको यू सी एन अपॉस्ट्रोफी एस, सो ज़हन में रखिएगा कि वो या तो इज के साथ की कंट्रैक्शन है या वो हैज़ के साथ की कंट्रैक्शन हो सकती है. तो हम जब आगे जाएंगे इंशाल्लाह बिगिनर में, एलिमेंट्री में, इंटरमीडिएट में, तो फिर वहाँ पे जाके हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. सो कंट्रैक्शंस विथ बी ज़हन में रखें. अगर आपको ऐसा कुछ लिखा नजर आ रहा है तो ये कंट्रैक्शन है, ये possessive pronoun नहीं है. So like I said, more rules in the beginner level we're gonna learn. There are more rules to this,
and it's not possible to learn everything at this level. What's important that we learn less and make sure that we understand. देखिए बताऊं क्या, कुछ लोगों की कोशिश या जहन ऐसा होता है कि एक दिन में सब कुछ सीख लें। भाई एक दिन में कुछ भी नहीं आता, सही है ना, एक वक्त होता है, दरकार होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि एक दिन में थोड़ा सीखें और फिर वो जहन में रहे मुस्तकिल, ठीक है। वो ज़हन में रहे, उसको सीख के आप अप्लाई करने के काबिल हों। बोलते वक़्त आप उसको सही इस्तेमाल कर रहे हो और लिखते वक़्त आप उसको सही इस्तेमाल कर रहे हो, ये ज़रूरी है। बजाय इसके कि आपने सीख लिया 10, 15, 20 चीज़ें सीख ली, बहुत खुश हो गए और आया एक भी नहीं। वो कहते हैं ना, अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन द बुशेस, कि जी वो 2 जो है ना, परिंदे अगर झाड़ियों में, तो जनाब उन अगर आपके हाथ में एक है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सीखें, लेकिन कोशिश ये करें कि वो थोड़ा जो सीखा है ना, that you are able to apply it when you speak and when you write. जब आप लिखें तो उसको सही इस्तेमाल करने के काबिल हों, जब आप बोलें तो उसको सही इस्तेमाल करने के काबिल हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? बाकी वो तो अगर आप इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा जनाब कह रहे हैं स्टूडेंट्स बुक्स, सर क्यों इज़ दैट वी प्रोनाउंस क्यों? डज़ दैट मीन स्टूडेंट्स बुक्स, क्यों प्रोनाउंस सिंगुलर प्लूरल सेम? हाउ कुड वी आइडेंटिफाई, ओह या कैसे पता चलेगा? बोलने वाले को पता होना चाहिए ना वो किसके बारे में बात कर रहा है, कोई आगे थोड़ी बताएगा आपको। क्या ख्याल है? कोई आपको आगे तो नहीं बताएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं या प्लूरल की बात कर रहे हैं। अब कोई सामने वाला बोल रहा है, चलें फ़र्ज़ कर लें सामने वाला आपसे बात कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता होगा, क्योंकि जब वो बात कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि वो एक की बात कर रहा है या एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये होता है, ये सवाल अमूमी तौर पे आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर स्टूडेंट्स बुक्स है। स्टेज पे लेके आता हूँ मैं सवाल। अच्छा जी, तो नज़र आ रहा है सबको मेरे ख़्याल में, अगर स्टेज पे आप मैंने अभी सवाल मैं लेकर आया हूँ, स्टूडेंट्स बुक्स कैसे पता चलेगा? इसके आगे ये स्टूडेंट्स बुक्स नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे स्टूडेंट्स बुक्स आर ऑन द डेस्क, राइट? और इसके आगे-पीछे भी कुछ जुमले होंगे, सिर्फ़ एक जुमला बोल के आप चुप नहीं हो जाएँगे। जब कोई बंदा बात करता है तो उसके आगे-पीछे भी, जुमलों के आगे भी कुछ पीछे जुमले होते हैं। which makes it clear for you to understand what it's about, what the sentence is actually about. जब कोई जुमला बंदा बोलता है तो उसके आगे पीछे भी जुमले बोलता है, सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज़ या एक छोटे से टुकड़ा बोल के खामोश नहीं हो जाता। तो इंसान को, सुनने वाले को, जब कोई बातचीत चल रही होती है तो उसको पता होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इसलिए तवज्जो के साथ सुने कहते हैं ना, तवज्जो के साथ आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपको कभी भी मसला नहीं होगा। आप देख लीजिएगा खुद से, ठीक है? So I have answered your question. If you've got any other questions, anybody. So you know what I'm gonna do is I'm gonna share a link with you, and just give me a second. And there's a quiz that you need to take. It's a simple quiz, not difficult, but it's gonna tell me, and tell you how much you actually understood this topic. अब ये क्विज करने से पता होता क्या है? ये पता चलता है कि आपको आता कितना है, आपको कितना समझ में आया। कुछ लोगों के ज़हन में होता है हमें सब आ गया, हमें तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वाक़ई ये तो, इन लोगों को तो हम सिखा ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं सिखा सकते। मैं क्या, कोई भी नहीं सिखा सकता। तो सीखने के लिए तो पहले ज़रूरी है कि बंदा ये कहे, हाँ यार मुझे ये नहीं आता, मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो ये क्विज़ है उन लोगों के लिए। सो द लिंक इज़ इन द चैट, क्लिक द लिंक, टेक द क्विज़, and yeah, I'm waiting for your quiz results. Okay, the link is in the chat, everybody. Okay, and for those of you watching us on YouTube and Facebook, if you're interested in taking this class, there's a link. You can still join this class. Class recordings are available, and handouts and other stuff is already available on the Academy website if you're interested in being a part of this class and actively participate in activities. So I suggest that you click the link and join this class. So that's all. I'm gonna stop streaming this class on Facebook and YouTube, right? Okay, so I'm gonna stop this now.